Good morning, students. Once again, in previous video, we are discussing about different types of wellness. We can discuss in previous video about physical wellness and intellectual wellness. Intellectual wellness means mental wellness. We are move on to our next type of wellness. It is a social wellness. Social wellness tell us about the status. Tell us about the status of a person social life. Social wellness plays a constructive role in the community. Constructive role in the community. We can again repeat the sentence. Social wellness play a constructive role in the community we live. It is shows the interaction. Social wellness shows the interaction between peers. Peers means जो साथ में लोग होते हैं, peers, groups, neighbors, पड़ोसी, family members, etc. Better understanding and a good bonding. Better understanding and good bonding are the key points of social wellness. Are the key point of social wellness. हम कह सकते हैं social wellness means how a person behave in their society. How it can behave, the behavior of a person or an individual in society. How he or she can interact to the family members, neighbors, and their colleagues, and many more. That's so how a person has to be socially well or not. Next we can move on to next topic, emotional wellness. Emotions, we all know what is emotion. Emotion means joy, anger, happiness, jealousy, sadness, and many more. Emotional wellness means inner feeling of a person. Emotional wellness help us to be control our feeling. With the help of emotional wellness, we can control of our feeling, as well as it also help ones to manage stress. With the help of emotional wellness, we can also manage the level of stress. This kind of wellness means emotional wellness. So, how we can represent our feeling? How we can show our feeling in front of other person in productive manner. Productive manner का क्या मतलब है यहाँ? प्रोडक्टिव मैनर का मतलब है कि हम लोग अपने इमोशंस को एक एप्रोप्रिएट मैनर में एक दूसरे के सामने शो करें. अगर हम बात करते हैं गेम से रिलेटेड, तो गेम्स में अगर हम जीतते हैं तो जीत की खुशी मनाना ज़रूरी है, पर तो खुशी इतनी ज़्यादा भी नहीं हो कि आपके अपोनेंट को बहुत ज़्यादा बैड फील. और अगर आप हार जाते हो तो इतना दुख भी नहीं होना चाहिए कि आप डिप्रेशन में चले जाए. तो फीलिंग इन फ्रंट ऑफ अदर्स इन अ प्रोडक्टिव मैनर्स, दैट्स सो emotional wellness. Emotional wellness means control over our emotion. Control over our emotion is known as emotional wellness.
Move on to next topic, spiritual wellness. Spiritual wellness. Spiritual wellness plays a vital role in person life. It helps us to cope. Cope means fight. किसी के against fight करना. It helps us to cope or deal with the issue that come in our day-to-day life. Day-to-day life. It means हम लोगों के डेली वर्क में जैसे सिचुएशन आती हैं, इशूज आते हैं, तो हम उनको कैसे डील करते हैं, हाउ वी कैन कोप विद देम. इट शोज स्पिरिचुअल वेलनेस. स्पिरिचुअल वेलनेस include set of values. Spiritual wellness include set of values that offer us a true meaning and bind us together. True meaning and the purpose of spiritual wellness is bind us together. ये हम लोगों के माइंड में हमेशा स्पिरिचुअलिटी कि हम लोगों का समूह का पर्पस क्या है, हम सब एक जैसे हैं और एक नोबेल कॉज के लिए इस अर्थ पर हम लोगों का बर्थ हुआ है और वी कैन परफॉर्म द टास्क हैविंग स्पिरिचुअलिटी. अ ट्रू स्पिरिट के साथ हम लोग किसी वर्क को कर रहे हैं. नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल वेलनेस. Occupational wellness is the ability to achieve a balance. It is ability to achieve a balance between work and leisure time. Coping with workplace and stress and turn to make healthy relationship between colleagues. Again, repeat the sentence. Try to understand. It is ability to achieve a balance between work and leisure time. Work and leisure time. Coping with workplace, or we can say dealing with workplace and stress. जब हम लोग किसी वर्क प्लेस पर काम करते हैं तो वहाँ स्ट्रेस जनरेट होता है, तो उस स्ट्रेस को चेंज करना और मेक हेल्दी रिलेशनशिप, और एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाना कलीग्स के साथ. वहाँ जो लोग आपके साथ काम करते हैं तो उस प्लेस पर स्ट्रेस ना लेना, डील करते हुए उनके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाकर रखना ऑक्यूपेशनल वेलनेस का एक पार्ट. दिस ऑफर गिव पर्सनल सेटिस्फैक्शन. ये चीज़ें आपको एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन देती हैं and enrich life, and it also enrich life.